very warm welcome. Prime Minister Narendra Modi will be receiving the United Nations' highest environmental honour, Champions of the Earth Award, at a special ceremony in New Delhi. And UN Secretary General Antonio Guterres will be presenting the honour. Let us cut across live to the event. We welcome the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, by presenting him the green sapling. Our greetings to Mr. Antonio Guterres, the United Nations Secretary General. To Shrimati Sushma Swaraj, the Honourable Minister of External Affairs. Welcoming Dr. Harshvardhan, the Honourable Minister of Environment, Forest and Climate Change. Our greetings to Mr. Erik Solheim, the Executive Director, United Nations Environment. And to Dr. Mahesh Sharma, the Honourable Minister of State, Environment, Forest and Climate Change. Excellencies, ladies and gentlemen, the Champions of the Earth Award is a highly prestigious award. This is the United Nations' highest environmental honor. And every year, this award confers and recognizes outstanding personalities from business, from civil society, from government, recognizing their outstanding contributions and people who have had a very transformative impact on the health of our planet. Just last week, on the sidelines of the United Nations General Assembly in New York, the names of the 2018 Champions of the Earth awardees were announced and applauded in a glittering ceremony. At the outset, we show you the glimpses of the ceremony. The United Nations is all about bringing people together. The challenges which face our planet can't be overcome unless we cooperate. It really means so much to me to be here with you in New York to celebrate some of the most remarkable human beings in this world. Every year, the award seeks out and celebrates the world's most exceptional environmental leaders, advocates, and innovators. We all owe a duty and responsibility to protect our planet. Environment protection is a global challenge that requires attention and action from each individual on this planet. We need to act now. Each of us can take transformational actions. With these awards, we recognize bold moves which have been taken and the promise of more action to come. This is the most urgent problem the world faces today. What protein you're going to place at the center of your plate. And the implications of that decision are vast for the environment. 今天，习近平主席亲自推动了千村示范万村整治工程，使我们的村庄变成了一张亮丽的明信片。 We pledge to fight climate change and global warming and to make this a better world. Prime Minister Narendra Modi of India and President Emmanuel Macron of France are recognized. By polluting the oceans, not mitigating CO2 emissions, and destroying our biodiversity, we are killing our planet. There is no planet B. और उस काम में भारत पूरी तरह आपके साथ है. दुनिया जो चाहता है उसमें भारत कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है. What makes a champion of the earth? They are the leaders and exemplars we need right now. Definitely a very proud moment for 1.3 billion people, and in this August gathering we celebrate the exemplary contribution of our Prime Minister in keeping the health of this planet. And now may I request Honourable Minister for Environment, Forest and Climate Change, Dr. Harshvardhan, for his welcome remarks. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Your Excellency, Secretary General of the United Nations, Mr. Antonio Guterres, United Nations Environment Programme Executive,
Director, Mr. Eric Solheim, Honorable BJP President, Shri Amit Shah ji, Honorable External Affairs Minister, Shrimati Sushma Swaraj ji, Minister of State, Environment, Dr. Mahesh Sharma ji, all my worthy cabinet and party colleagues, distinguished ambassadors, representatives of the diplomatic missions, senior officers of the government, other distinguished guests, and friends from the media who have come to grace this prestigious occasion. I feel honored and delighted to welcome you all to this historic occasion when the United Nations Secretary General, Mr. Antonio Guterres, confers the United Nations highest environment honor, the Champions of the Earth Award 2018, on our beloved Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It is indeed a proud moment for all Indians. On behalf of my fellow countrymen, I thank the United Nations for honoring our Prime Minister for his outstanding and inspiring leadership and commitment in the arena of environment. I take special pleasure in welcoming the Secretary General of the United Nations and former Prime Minister of Portugal, Mr. Antonio Guterres. Portugal is a country having a nostalgic bond with India, and our economic ties continue to follow an upward trajectory. I am also very happy to welcome my dear friend Mr. Eric Solheim, who is working very closely with us and has literally made India his mission. Friends, today our beloved Prime Minister is to be felicitated for his leadership on environmental issues and sustainable development, with a focus on clean energy, formation of the International Solar Alliance, and his very commendable pledge to eliminate single-use plastics by 2022. Our humble Prime Minister, in keeping with the Indian tradition of renunciation, has already announced that he is dedicating this award to the Indian value system. It is indeed a hallmark of his unique personality that he renders selfless service to the nation but never takes any credit for it. The United Nations Environment Programme has termed Shri Narendra Modi ji as a leader with remarkable vision, innovation, courage, determination and commitment. It is indeed for the whole world to see that India, under the able leadership of Shri Narendra Modi ji, is committed to inclusive development and raising the standard of living of our people in a sustainable and green way. Rightly, the United Nations has recognized our Prime Minister as a statesman with exemplary devotion and commitment to uplift the poor, strengthen public health, and protect the environment through numerous initiatives launched in the last 4 years. After assuming leadership in 2014, Modi ji gave a call for Swachh Bharat mission, a massive Clean India drive. He personally took charge of this campaign to rid the country of pervasive insanitary conditions all around. More than 8 crore toilets have been constructed in the last 4 years to make India open defecation free. As many as 25 states have become open defecation free, and so have 5 lakh villages. Today our villages are fast becoming cleaner, and deaths due to diarrhea are history. That itself speaks volumes for Modi ji's vision in nurturing environmental health. Similarly, poor women in rural India were being forced to use biomass as cooking fuel. The resulting household pollution was leading to a great human suffering. For 70 long years, nobody took action. It was Modi ji who was moved by the plight of these helpless women and conceptualized the Ujjwala Yojana that envisages providing LNG as cooking fuel to 80 million households. Prime Minister personally monitors the program, which has relieved the misery of crores of women.
When the history of environmental and public health shall be written in this country, the name of our Honorable Prime Minister will be embedded there in golden letters. Ladies and gentlemen, our government, under the leadership of Modi ji, has vowed to work for reversing climate change, managing hazardous waste, protecting wildlife and so on. Under his astute leadership, the Environment Ministry is working relentlessly to spread mass awareness on environmental protection through a massive citizens campaign called the Green Good Deeds. The youth have also taken inspiration from Modi ji and are leading the change, making responsible choices to ensure that they do all that they can to reverse climate change. A country of 1 billion plus is looking up to Modi ji with hope and expectation. A new India has emerged, wedded to the past, but imbibing modern ideas. A young nation is now up and running and continues to grow at a pace never imagined by economists. And we all know the man whose vision has made this possible. Yesterday was the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, fondly known as Bapu, and revered by the whole world as the Messiah of non-violence. Decades ago, Bapu dreamt of a Swachh Bharat. Today, his dream is being brought to reality by a man as humble, as committed, and as brave as him. Our beloved Prime Minister, Modi ji, is inspiring 130 crore Indians to achieve the goal of Swachh Bharat and making remarkable strides in cleanliness and sanitation, in environmental protection and upliftment of the poor and the downtrodden. From this prestigious dais, let it be known that a person coming from a humble background is slowly transforming India. Millions of poor who had no hope of coming out of their subhuman existence have a glimmer of hope in their eyes today. Let us all, on this historic day, take a pledge to join our beloved Prime Minister in his pursuit of transforming India. Dear sir, India stands with you. We share your dreams and we believe in you. Once again, I welcome all of you present here today at the celebrations of this historic occasion. Namaskar and Jai Hind. Thank you, Honourable Minister, sir, also for highlighting the transformative impact which the Honourable Prime Minister has been making. And may I now request the Head of the United Nations Environment, Mr. Erik Solheim, for his opening remarks. Dear Prime Minister Modi, dear Secretary General, there are so many dignitaries in this room, I cannot mention you all, but I'm so happy to be with you this great morning in Delhi. My dear Modi ji, the most important raw material in today's world is not gold or oil or energy or any mineral. The most important missing raw material in today's world is political leadership. That's what's transforming the world. Political vision, political leadership, political dedication, that's what so often is lacking, and that's what I admire so much from you. You are providing that to India and to the much wider world. Some of you are aware, but for many years of my life I came to India maybe every 6 weeks. I was the chief negotiator in the peace process in Sri Lanka. I came here to confer with Indian leadership from BJP and from Congress. It was a very different India, even if it's just 10, 15 years back. A much poorer India. At the time there was no metro in Delhi. Now you are opening a new metro station basically every week. So it was a very different India. And it was also an India with a very different debate. The time the debate was always, do India want to develop or do India want to take care of Mother Earth and the nature? And surprise, surprise, most Indians wanted to develop. I give you credit
one-handedly to transform that debate into a debate not about development or environment, but a debate about environment and development as one track where we can do triple wins, put up policies which are good for the environment, good for jobs and economic growth, and good for the uplifting of the people and the health all at the same time. Well, this is maybe not new in India, because I think environment runs deeper in the veins of Indians than in most people in the world. And that's not least thanks to the natural-born environmentalist Mahatma Gandhi. He was an environmentalist at a time when the notion didn't exist. I don't think the name environmentalist did exist in the 1920s or 1930s. Still, he was probably the greatest environmentalist ever walking this planet. I mean, his lifestyle was very modest. That's always helpful. He bonded with nature in a fantastic way. I mean, Mahatma Gandhi said that if you want to look into the character of a person, look into how that person is treating animals. He said, the way we are treating our forest is a mirror image for ourselves. This is really being an environmentalist at a time when the notion didn't exist. Mahatma Gandhi was also one of the first people I am aware of who pointed to the enormous negative consequences of air pollution. He said, man can subsist for many days without food. We can even go a day without water, but we can only go a few minutes without air. So let's protect the air against the horrendous air pollution. And he looked into how the factory workers of the time were polluting bad air. So this is an environmentalist at a time where there were no environmentalism. It's so inspiring to all of you. And one of the most famous quotes from Gandhi, in my view, was he said, cleanliness is godliness. And can there be any better way of taking that quote, that inspiration of Gandhi, into the 21st century than the Swatch India campaign? Cleanliness is godliness, providing toilet to every single Indian, making sure that everyone in the countryside of India has a family toilet, avoiding the open defecation, making sure that there is much less pollution into the great rivers, to the Ganga, and to all the other rivers. Can there be any better way of honoring Mahatma Gandhi than Swatch India? And this is the triple win policies we want. Much better for the health of people, because there is less bacteria, much better for the environment and the great rivers, and providing any number of jobs and economic growth, all with the same policies. So Swatch India, triple win, environment, health, and jobs. But of course there are other such triple wins policies. Another one is plastics. It must have been the proudest moment in my life in the United Nations when I was in Delhi on the 5th of June, when Prime Minister Modi announced that India will wipe out all one-use plastic by 2022. That's such a brave statement. You may not be able to do it fully, but even setting the target, setting the direction, has such an impact. You see the impact immediately. When that leadership comes from the top, well, you see the impact in the state of Uttar Pradesh. You see it in Tamil Nadu. You see it in Maharashtra. We tried to buy one-use cutlery in the state of Maharashtra. What did people tell us? Well, they said, well, you have to go somewhere else. We didn't want to use it. We want to make a video to throw away the one-use of the plastic cutlery. They said, no, we don't have it here. Go to another state. And of course, with Maharashtra, 120 million, UP 200 million, Tamil Nadu 80, 90 million, when these entities start moving, it's enormous for the world. And all the big leaders of business in Mumbai, again, coming together, see how can business benefit from these opportunities to move into new and better products and create new business opportunities. Again, good for the environment, good for health, and good for business and jobs, with just one policy. And please also remind yourself of the international implications of this. India is soon to be the most populous nation in the world.
India is probably the most complicated society on the planet in its enormous variety and richdom. If India can wipe out one-use plastic, there is nowhere to hide. You cannot stand up in the parliament of, well, my nation, Norway, or South Africa, or Ecuador, or Brazil, or Cameroon, or anywhere else in the world and tell the people, oh, only the Indians can do this. We cannot do it. India can do it, everyone can do it, there is no place to hide, so this is of fantastic importance to the rest of the world. Thank God you are not alone. The European Union has a very ambitious plastic strategy. Parliament of Chile just made a very strong decisions for Chile. Many African nations like Eritrea, Kenya, Rwanda have strong policies. So a lot is happening, but India is in the lead. That's what we want to honor today. And it's, of course, not just plastic pollution, it's also air pollution. UN Environment is very, very proud to work with the government of India, with the Minister of Petroleum, with some of the northern Indian states, to see how we can transform the agriculture waste in the areas around India, in the UP and Haryana and the other states, how that we can transform into an economic opportunity for the future. If you can make the environmental, the agriculture waste into a biofuel, again, good for environment, good for health, and good for the economy, all that with the same policies. Dear Prime Minister, when we met, you told me a moving story. You said your grandparents were very poor. Your grandfather had told your grandmother that maybe you should go and chop some wood in the forest. But your grandmother said, no, yes, we are poor, but we will not destroy the forest. That's too sacred for us. To me, that's a very moving story about the dedication to nature. And also nature, we now see great progress in India. The amount of forest is increasing after many, many years of decrease. Fantastic. I mean, for sure, a lot more needs to happen, but it's on the positive side. The tiger population is gradually increasing. Again, great credit to India. Remind yourself, there is hardly any animal on the planet which is so difficult to conserve as tigers, because tigers is one of the very, very few animals who attack Indians to kill us, to eat us. I mean, malaria, mosquitoes are more dangerous to humans than tigers, but they don't try to eat us. So making the tiger population grow is a great credit to India, and it shows the dedication to nature under your leadership. Finally, solar energy. Energy is at the core of everything. And what an achievement to connect 700,000 villages of India to the electrical grid. True, not all households are still connected, that's the next. But to connect every single village, 700,000, it's such an achievement. And more it's happened with solar, with big solar, with small solar, but transforming the economy from the old coal-based into the new solar-based. And through that, you also create many more jobs, because there are many more jobs in the solar energy. And we had the honor not just to honor you in New York, but also to honor Kochi International Airport, the first fully solar airport anywhere in the world. And I tell my... And it's not a small airport. Kochi is bigger than any airport at the African continent except for South Africa. So it's a big airport from an international perspective. When I tell my Chinese friends, my European friends, my American friends, well, if the Indians can do that in Kochi, for sure you can do that in Florida, or you can do that in the sun-rich part of China or Europe. So it's, again, inspiring the entire world and making International Solar Alliance a huge positive for the future. I saw Prime Minister said that maybe this is the OPEC of the future. Yes, we will see an enormous transformation of the global economies into solar in the years to come. Last year was the first year in human history where we produced more solar energy than oil and gas, coal, and nuclear combined. So the transformation is happening. We just need to speed it up. Finally, even a Prime Minister is not alone. Without a good team, you cannot have achieved all this. Let me pay tribute to my very good friend, Dr. Harshvardhan, the man who wiped out polio from India and is now transforming India into green, and to C.K. Mishra.
Chief Secretary of the Ministry, and all the other dedicated people, because you are the support team making what the Prime Minister is doing possible. Finally, we need political leadership. We need visionary leadership. We need the dedication and determination which you are providing. This is also in line with Mahatma Gandhi, who famously said, "We need to be the change we want to see in this world." And Prime Minister, you are leading us in that area. You make it possible for us to be the change we want to see in this world. Thank you so much. Thank you, Mr. Solheim, for sharing with us the keen observation, the change which you see in India, and that definitely inspires and motivates everyone. Thank you so much. And may I now request Srimati Sushma Swaraj, the Honourable Minister for External Affairs, for her remarks. भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव महामहिम एंटोनियो गुतेरस जी, यूएनईपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेरे पुराने मित्र श्री एरिक सोलेहम जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी और आज के कार्यक्रम के आयोजक पर्यावरण मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, मंत्रिपरिषद के मेरे बहुत सहयोगीगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज भारत के लिए बहुत बड़े गौरव का दिन है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में नेतृत्व देने के लिए चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। मित्रों, ये पुरस्कार उस असाधारण नेतृत्व का सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी भारत के साथ साथ विश्व को भी प्रदान कर रहे हैं। आप में से शायद कुछ लोगों को जरूर याद होगा कि जब पेरिस समझौते से कुछ विकसित देशों ने बाहर निकलने की बात की और उस समझौते की सफलता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया, उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे आगे आकर कहा था कि पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर हमने किसी देश के मोह या दबाव में नहीं किए थे, बल्कि भारतीय संस्कृति, जो 5000 बरस पुरानी भारतीय संस्कृति है, उसके प्रति आस्था के प्रतीक के रूप में किए थे। ये पुरस्कार उस संकल्प का सम्मान है जो विश्व को आश्वस्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था। गुतेरस जी और एरिक, जिस भारतीय संस्कृति का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया था, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूं कि हम अर्थ को प्लेनेट नहीं मानते। पृथ्वी हमारे लिए ग्रह नहीं है, पृथ्वी हमारे लिए मां है, मदर अर्थ। और हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं उन सूक्तों से जहां पृथ्वी को मां कहकर पुकारा गया है। अथर्ववेद का एक सूक्त है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। और इसीलिए मुझे याद है कि बचपन से हमें यह सिखाया गया था कि सुबह उठकर जब पलंग से नीचे पांव उतारो, धरती पर रखो, तो हाथ जोड़कर कहना, पादस्पर्शम क्षमस्व में। हे धरती मां, मैं तुम्हारे शरीर पर अपने पांव उतार रहा हूं, मुझे क्षमा करना। और यही एक कारण है कि पश्चिम में जब भवन बनाए जाते हैं तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जाती है, लेकिन भारत में जब भवन बनाए जाते हैं तो भूमि पूजन समारोह किया जाता है। हम पृथ्वी का पूजन करते हैं, विधि विधान से करते हैं,
और केवल पूजन नहीं करते, हम क्षमा मांगते हैं उससे। जब पहला कुदाल चलाते हैं तो कहते हैं, मां तुम्हारे हृदय को छलनी कर रहे हैं, हमें क्षमा करना। और केवल पृथ्वी से नहीं मांगते क्षमा, हम उन चींटे चींटियों से भी क्षमा मांगते हैं, हम उन कीड़े मकोड़ों से भी क्षमा मांगते हैं जिन्होंने अपने घरौंदे उस धरती पर बना रखे होते हैं। हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, अपना घर बनाने के लिए हम तुम्हारे घरौंदे तोड़ रहे हैं, तुम्हें यहां से दूर जाना होगा, कहीं और घरौंदा बनाना होगा, हमें क्षमा करना। यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हम अंतरिक्ष की भी शांति की बात करते हैं और हम पृथ्वी की भी शांति की बात करते हैं। इसी आस्था की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे जिस समय उन्होंने पेरिस समझौते के लिए संकल्प लिया था कि हम इस समझौते को फेल नहीं होने देंगे। और मैं आज कहती हूं कि उसी संकल्प के बाद बहुत तेज गति से उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम प्रारंभ किया। जो आईसा इंटरनेशनल सोलर अलायंस उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर बनाया था, उसको बहुत तेज गति से आगे ले जाने का काम किया। गुतेरस जी, आज एक घटना मैं आपको बताना चाहती हूं। जिस समय वर्तमान सरकार आई तो प्रधानमंत्री जी ने एक समिति का गठन किया जो जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए बनी थी। मैं उस बैठक में थी, इसलिए मैं साक्षी हूं उसकी। बहुत खुलकर चर्चा हो रही थी और पूरी सभा दो भागों में बटी हुई थी। एक तरफ पर्यावरणवादी, दूसरी तरफ विकासवादी। पर्यावरणवादी कह रहे थे कि ऐसे विकास का क्या लाभ जो प्रकृति को विनाश करके, नष्ट करके किया जाए। जिस दिन प्रकृति क्रोधित होगी तो इस पूरे विकास का विनाश कर देगी। और दूसरी तरफ विकासवादी कह रहे थे कि विकसित देशों ने अपने आप तो सब कुछ कर लिया, प्रकृति को नष्ट करके अपने देशों को विकसित भी कर लिया, और आज जब हमारे जैसे देशों की बारी आई तो हमें प्रवचन दे रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, पर्यावरण सुरक्षा की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत शांति से सुनते रहे और अंत में पूरी चर्चा का समापन करते हुए उन्होंने कहा कि क्या पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए विकास नहीं हो सकता? मैं तो समझता हूं कि पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए विकास हो सकता है। तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि औद्योगिकरण के लिए बिजली चाहिए, हमारे यहां तो कोयला है, थर्मल पावर की जगह कहां से बिजली आएगी? तो उन्होंने तुरंत कहा बिजली चाहिए, वो थर्मल की जगह सोलर से भी आ सकती है। तो फिर प्रश्न आया कि सोलर से कितनी बिजली आ सकती है और सोलर की बिजली महंगी कितनी होगी? तो उन्होंने कहा कि सूर्य के पास तो अपार ऊर्जा है, जितना चाहो वो दे सकता है, ये तो आपको लक्ष्य रखना है कि कितनी बिजली चाहिए। और जहां तक महंगी का सवाल है, जब ज्यादा चीज आने लगती है तो अपने आप सस्ती हो जाती है। और उन्होंने उसी दिन कहा कि हम पर्यावरण की सुरक्षा के साथ विकास करके दिखाएंगे। मित्रों, यह उस इच्छा शक्ति का सम्मान है जो इच्छा शक्ति उन्होंने उस बैठक में प्रदर्शित की थी। और वो शब्द शब्द नहीं रह गए, उन शब्दों को उन्होंने कार्यों में परिणत कर दिया। हैरान हो गया था विश्व जिस समय उन्होंने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हम पैदा करेंगे। 175 गीगावाट, सच पूछो तो उससे पहले हमने कभी गीगावाट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया था, हम मेगावाट में बात करते थे। लेकिन गीगावाट में 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, और उसमें भी कहा 100 गीगावाट केवल सोलर से, 60 गीगावाट विंड से, यानी सूर्य और पवन जिनके पास अगाध संपदा है, कभी खत्म न होने वाली संपदा है, हम उससे करेंगे। और आज मैं ये कह सकती हूं कि प्रधानमंत्री ने जो शब्द अपनी इच्छा शक्ति दिखाते हुए उस दिन कहे थे, आज उसे पूरा कर दिखाया। जिस सौर ऊर्जा को लोग महंगी कहकर
अपनाने से कतरा रहे थे, आज गुतेरस जी और एरिक मैं आपको बताना चाहती हूं, 17 रुपए 19 पैसे वाली वो ऊर्जा आज 2 रुपए 44 पैसे में मिल रही है। 2 रुपए 44 पैसे, 2 रुपीज एंड 44 पैसा। तभी मैंने कहा कि ये उस इच्छा शक्ति का सम्मान है जो उन्होंने दिखाई है। और आज भी पर्यावरण के क्षेत्र में जिस तरह का नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जब एसडीजीज बने थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो ये कहा गया था कि हम इस लक्ष्य को केवल तब प्राप्त करेंगे जब भारत इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। अगर भारत ने प्राप्त नहीं किया तो हम फेल हो जाएंगे। लेकिन तब भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उस समय वो यूएन में बोल रहे थे 2015 में, कि भारत केवल आपकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरेगा, बल्कि समयावधि से पहले इन लक्ष्यों को प्राप्त करके कभी आपको फेल नहीं होने देगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूं। ये पुरस्कार उस विश्वास का सम्मान है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं सेक्रेटरी जनरल गुतेरस का, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूएनईपी एरिक का, कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को ये पुरस्कार देकर उनके नेतृत्व को एक वैश्विक पहचान बख्शी है। आज विश्व मंच से ये कहा जा रहा है कि चैंपियंस ऑफ अर्थ के रूप में हम प्रधानमंत्री मोदी का चयन कर रहे हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं आपके प्रति, क्योंकि ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे इदारे हैं, अगर इनकी मोहर लग जाती है तो पूरा विश्व मानने लगता है कि हाँ, ये काम हो रहा है। मैं पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। आपने हमारे प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व को सम्मानित किया है, असाधारण नेतृत्व को सम्मानित किया है, उनके संकल्प को सम्मानित किया है, उनकी इच्छा शक्ति को सम्मानित किया है और विश्व को दिए गए उनके विश्वास को सम्मानित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you so much, ma'am, for sharing with us certain key insights which again reflected on the very noble vision and mission which our Honorable Prime Minister has towards protecting the Mother Earth and the change which he is leading. Thank you so much, ma'am. And ladies and gentlemen, we are really delighted, in fact really honored to have the presence of His Excellency Mr. Antonio Guterres present with us, the United Nations Secretary General. I would now like to request and invite him for his special address. Honorable Prime Minister Modi, Excellencies, ladies and gentlemen, all protocol observed. I'm extremely pleased to join you to present the United Nations Champions on the Earth Award for Policy Leadership for 2018. And today we recognize a statesman who embodies the true meaning of leadership. Prime Minister Modi recognizes that climate change poses a direct existential threat to us all. Prime Minister Modi knows that we need to do what we need to do to avert catastrophes. And Prime Minister Modi understands the enormous benefits of climate action. Many other leaders also recognize, also know, and also understand. The difference is that Prime Minister Modi not only recognizes, knows and understands, but that he acts with enormous energy to make things change. And this leadership is today more necessary than ever, because let us be clear, climate change is still running faster than what we are. The Paris Agreement on climate change that we absolutely must implement is not being indeed fully implemented, and many leaders around the world are not doing enough to make sure that it becomes a reality. And we know that the Paris Agreement is not enough. We know that we need more ambition. We know that we need to increase the engagements that were made in Paris when 2020 countries will present their new commitments. But the truth is that this example of leadership that Prime Minister Modi represents is not being followed enough in the world. Now, the truth is that Prime Minister Modi also represents an extraordinary legacy. India has always been
a fundamental pillar of civilization, philosophy, culture in our world. And starting by the Vedas and looking at the extraordinary role of Mahatma Gandhi, there is always a very clear commitment to the harmonious relationship between humankind and nature. And this vision of harmony is the vision that guides what is today the most enlightened policy in relation to the environment and the economy, in relation to climate action as an absolute priority in today's world that is assumed by Prime Minister Modi and by the government of India. And we need also to recognize that this example must fructify, that other leaders must look at what's happening in India and must do the same, of course, with different circumstances in different countries, to make sure that we are able to win the race against climate change and that we are able to understand that today there is no contradiction between climate action and development. On the contrary, the green economy is the good economy. Technology is on our side. Those that will bet on the grey economy will have a grey future. And those that, like in India, are betting in the green economy will have a dominant role in the global economy in the decades to come. And this vision proves that it is absolutely possible at the same time to provide for the people of the country the jobs that are needed, the perspectives of development that are necessary, the conditions of well-being that are essential, and simultaneously guarantee the harmony with nature, have climate action as a priority, and make the green economy the economy of India. And indeed, under Prime Minister Modi's leadership, India has installed 300 million LED light bulbs. I learned it yesterday. It's a remarkable achievement. Also, the 40 million clean-burning cook stoves in Indian homes. When I was High Commissioner for Refugees in many refugee camps, I saw the drama of women that had to go sometimes miles and miles to search for wood to be able to use their stoves in their small huts or in small houses, and then to see the effect of the smoke of those stoves in the health of the children, in the health of the parents. Now, the truth is that with these clean-burning cook stoves, India is addressing indoor air pollution, which affects women and children so acutely. And it's another way to prove that the green economy is the good economy and the well-being economy. And of course, let's not forget, I was yesterday in the first General Assembly of the International Solar Alliance that was launched in Paris in 2015 during the climate talks by Prime Minister Modi and the President of France. It is a remarkable achievement. A coalition of 121 countries dedicated to harnessing solar energy around the world for the benefit of the people and the planet. And today, that is absolutely clear. Solar energy became cheaper than the energy produced by coal, by gas, or by oil, which means, again, that the climate action is the right approach, not only from the point of view of the environment, but from the point of view of the economy and development. And today, indeed, thanks to Prime Minister Modi's leadership, India became the fourth largest producer of solar power and the fifth largest producer of renewable energy in the world. And I believe that very soon the ranking will improve thanks to the enormous investments that are being made and the strong determination to mobilize the people of India. I must confess that the impact of Prime Minister Modi's decisions already reached the Executive Office of the United Nations. As it was mentioned during the World Environment Day celebrations, Prime Minister Modi decided that India should get rid of single-use plastic in less than 5 years. Well, in the Executive Office of the United Nations, I decided to do it immediately. And there is no single-use plastic in the Executive Office now. And we drink water from a bottle, a jar, coming from the tub.
and all those small plastic bottles that are such a dramatic, have such a dramatic impact in pollution were eradicated thanks to the decision to follow the orientation that was given here in India in relation to your program. When I saw it, I said, if this can be done in India, I think it can be done immediately in New York, in the Executive Office of the United Nations. And this is the bold environmental leadership that the world needs. And so please join me in honoring the 2018 Champion of the Earth for Policy Leadership, Prime Minister Narendra Modi. Thank you very much. Thank you, Mr. Guterres, for your very inspiring words and also appreciating the efforts of our Honourable Prime Minister, who's setting benchmarks and examples for the others to follow. Thank you, sir. And ladies and gentlemen, before we confer the award, we would like to highlight here, with a short video, the inspiring views, the thoughtful approach and the leadership of our Prime Minister. Can we have the video, please? देखिए, भारत का मूलभूत चिंतन कोएग्जिस्टेंस का है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, ये भारत की मूलभूत फिलॉसफी के विरुद्ध में है और इसलिए हमारे यहाँ प्रकृति रक्षा ये समझौते का संबंध नहीं है। हमारे यहाँ प्रकृति की रक्षा इस संस्कार का संबंध है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा लंबे अरसे से हो रही थी, लेकिन बात हमेशा किसी न किसी एक्शन पॉइंट पर उलझ जाती थी। डेवलप कंट्री पैसे देंगे या नहीं देंगे, डेवलपिंग कंट्री योगदान देंगे नहीं, इसी पर चलता रहता था। वो डिबेट वहीं पूरी हो जाती थी। किसी ने व्यवस्था से जोड़े। ग्लोबल वार्मिंग का जवाब व्यवस्था से निकलेगा, हमारे बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण आर्टिकल से नहीं निकलने वाला है। और उसमें से इंटरनेशनल सोलर अलायंस और उसमें फ्रांस और भारत ने लीड किया। फ्रांस और भारत ने मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाया। एक तो देखिए, हमने दुनिया के सामने वादा किया है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का। ये छोटा टारगेट नहीं है, एक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे खुशी है, हम सभी पहलुओं पर, चाहे बायोफ्यूल हो, चाहे सोलार हो, चाहे विंड हो, चाहे हाइड्रो हो, सारी चीजों पर हम बल दे रहे हैं और मैं मानता हूं कि हम इसको अचीव करेंगे। अब जितने रिपोर्ट आते हैं, समुद्री के भी आते हैं, तो यही आते हैं कि प्लास्टिक समंदर को भी खा रहा है। तो एक सबसे बड़ा काम है लोगों को एजुकेट करना, दूसरा काम है रेगुलेट करना, कुछ नियमों को बनाना, तीसरा एक के बाद एक ऑल्टरनेट व्यवस्था देना। लेकिन हमारा प्रयास है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को और मानव जात को मुक्त कराना है। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि हम दुनिया को मैसेज देना बंद करें और हम सब लोग ये जो संकट है उस संकट की जिम्मेवारी को स्वीकार करें और जिम्मेवारी लेकर के उसको संकट से मुक्ति दिलाने का अपना कार्य हाथ में ले, उसको पूरा करें। And that reflects on the service which our Honourable Prime Minister is doing to the Mother Earth. And now the moment, may I request Mr. Eric Solheim and also Mr. Antonio Guterres to kindly confer the 2018 Champions of the Earth Award on our Honourable Prime Minister. May I request you please step forward? My question, please. Ladies and gentlemen, please join us in extending this honour to our Honourable Prime Minister, Shri Narendra Modi, the 2018 Champions of the Earth Award. And may I request the dignitaries also, if may I request the Honourable Prime Minister and the others for a group photograph, sir. Yeah. If I can request for a group photograph. Okay, sir. Thank you. Yeah.
Excellencies, ladies and gentlemen, I now take the privilege and honor of requesting and inviting the 2018 Champions of the Earth awardee, Shri Narendra Modi ji, to kindly address us all. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हिज एक्सेलेंसी एंटोनियो गुटेरेस जी, मंत्री परिषद के मेरी सहयोगी सुषमा स्वराज जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, डॉक्टर महेश शर्मा जी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एरिक सोलहिम, देश विदेश से पधारे अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, मैं इस सम्मान के लिए संयुक्त राष्ट्र का हृदय से आभारी हूं। हमारे लिए ये विशेष गर्व की बात है कि इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदुस्तान की धरती पर हो रहा है। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव स्वयं यहां आए, एरिक और उनकी पूरी टीम आई। और जैसा कि मैंने पहले कहा है, ये सम्मान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत की 125 करोड़ जनता की प्रतिबद्धता का परिणाम है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भारत की उस नित्य नूतन चिर पुरातन परंपरा का सम्मान है जिसने प्रकृति में परमात्मा को देखा है, जिसने सृष्टि के मूल में पंच तत्व पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु, उसके अधिष्ठान का आह्वान किया है। ये भारत के जंगलों में बसे उन आदिवासी भाई बहनों का सम्मान है जो अपने जीवन से ज्यादा जंगलों को प्यार करते हैं। ये भारत के उन मछुआरों का सम्मान है जो समंदर और नदियों से उतना ही लेते हैं जितना अर्थ उपार्जन के लिए आवश्यक होता है। ये वो लोग शायद स्कूल कॉलेज में नहीं गए होंगे, लेकिन वो लोग मछलियों के प्रजनन के मौसम में मत्स्य का काम, समंदर में जाने का काम बंद कर देते, अपने काम को रोक देते हैं। ये भारत के उन करोड़ों किसानों का सम्मान है जिनके लिए ऋतु चक्र ही जीवन चक्र है, जो इस मिट्टी को अपने प्राणों से भी प्रिय मानते हैं। ये भारत की उस महान नारी का सम्मान है जिसके लिए सदियों से रीयूज और रिसाइकल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहा है, जो पौधे में भी परमात्मा का रूप देखती हैं, जो तुलसी की पत्तियां भी तोड़ती हैं तो गिन करके तोड़ती है, जो चींटी को भी अन्न देना पुण्य मानती है। ये भारत में प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले अनाम चेहरों का सम्मान है जो लाभ, हानि, सुख, समृद्धि की चिंता किए बिना
दूर किसी गांव, किसी बस्ती, किसी पहाड़, किसी आदिवासी इलाके में बरसों से काम कर रहे हैं। मैं सम्मान के लिए आप सबका हृदय से फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं। भारत के लिए ये दोहरे सम्मान का अवसर भी इसलिए है क्योंकि कोची एयरपोर्ट को भी अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर हमारी वचनबद्धता का प्रतीक है। इस अवसर पर मैं उन सभी साथियों, संस्थाओं को बधाई देता हूं जिनको अलग अलग श्रेणियों में ये पुरस्कार मिला है, विश्व के अलग अलग देशों में मिला है। साथियों, मैं पर्यावरण और प्रकृति को लेकर भारतीय दर्शन की बात इसलिए करता हूं क्योंकि क्लाइमेट और कैलेमिटी का कल्चर से सीधा रिश्ता है। क्लाइमेट की चिंता जब तक कल्चर का हिस्सा नहीं होती, तब तक कैलेमिटी से बच पाना मुश्किल है। पर्यावरण के प्रति भारत की संवेदना को आज विश्व स्वीकार कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये हजारों वर्षों से हमारी जीवन शैली का हिस्सा रहा है। और अभी सुषमा जी ने इस बात का उल्लेख किया, हम उस समाज का हिस्सा हैं जहां सुबह उठने के बाद सबसे पहले धरती माता से क्षमा मांगी जाती है, क्योंकि उस पर हम अपने पैर रखने वाले हैं। एक तरह से अपना बोझ धरती पर डालने वाले हैं। हमारे यहां कहा गया है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। मतलब ये समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली, पर्वत रूपी शरीर वाली भगवान विष्णु की पत्नी, हे भूमि देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मुझे क्षमा करना क्योंकि मैं आपको अपने पैरों से स्पर्श कर रहा हूं। ये संवेदना है जो हमारे जीवन का हिस्सा है। पेड़ पौधों की पूजा करना, मौसम ऋतुओं को व्रत और त्योहार के रूप में मनाना, लोरियां, लोक गाथाओं में प्रकृति के रिश्ते की बात करना। हमने प्रकृति को हमेशा सजीव माना है, और सिर्फ सजीव माना ऐसा नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्होंने प्रकृति को सजीव माना है, सहज जीव भी माना है। प्रकृति के साथ इस भावात्मक रिश्ते के साथ ही पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कामना को हमारे यहां सर्वोपरि माना गया है। यजुर्वेद में इसलिए ही कहा गया है, ओम दयो शांतिरम अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधय शांति, वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति, शांतिरेव शांति सामा शांति एद्वित। ओम शांति शांति शांति। साथियों, संस्कृत में इस श्लोक में परमात्मा की प्रार्थना की जा रही है कि वायु में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, जल में शांति हो, औषधि में शांति हो, वनस्पतियों में शांति हो, विश्व में शांति हो, सभी देवता गणों में शांति हो। पूरे विश्व की शांति के लिए इस मंत्र से आह्वान किए जाना हमारे कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूरा नहीं होता है जब तक ये होता नहीं है। और तो और स्वयं ईश्वर को जब अपना परिचय देना था, अपने विस्तार का वर्णन करना होता है, तो स्वयं ईश्वर कहते हैं, स्त्रोतस्य अस्मि जाह्नवी सरसाम अस्मि सागर। यानी मैं ही जलाशय हूं,
मैं ही नदी हूं और मैं ही समुद्र भी हूं। इसलिए जो सम्मान आपने दिया वो भारत की जनता और उसके लोगों की इस आस्था का सम्मान है। साथियों, भारत की अर्थव्यवस्था आज तेज गति से आगे बढ़ रही है। हर वर्ष करोड़ों लोग भीषण गरीबी की स्थिति से बाहर आ रहे हैं। विकास की इस रफ्तार को और तेज करने के लिए हम समर्पित हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हमें किसी से मुकाबला करना है या फिर हमें संपन्नता का लोभ है, बल्कि इसलिए क्योंकि आबादी के एक हिस्से को गरीबी का दंश सहने के लिए हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उनको गरिमापूर्ण जीवन देना हम सभी का दायित्व है। दुनिया के अनेक देशों में सबसे गरीब ही प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के दुष्परिणाम को झेल रही है। सूखे और बाढ़ की गंभीरता साल दर साल बढ़ रही है और इसमें सबसे ज्यादा परेशान वही हो रहा है जिसके पास सीमित संसाधन है, जो गरीब है। लिहाजा इस बहुत बड़ी आबादी को पर्यावरण पर, प्रकृति पर अतिरिक्त दबाव डाले बिना विकास के अवसरों से जोड़ने के लिए सहारे की आवश्यकता है, हाथ थामने की जरूरत है। इसलिए मैं पेरिस में भी इस बात की मैंने वकालत की थी और मैंने एक शब्द दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था और मैंने वकालत की है क्लाइमेट जस्टिस की। क्लाइमेट चेंज की चुनौती से क्लाइमेट जस्टिस सुनिश्चित किए बिना हम इस परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकते हैं। मुझे खुशी है कि पेरिस समझौते में इस बात को दुनिया ने माना है और क्लाइमेट जस्टिस को लेकर कमिटमेंट भी दिखाया है। लेकिन इसको जमीन पर उतारने के लिए हमें अभी भी बहुत कुछ करना है और तेजी से करना है। मैं यहां उपस्थित हिज एक्सेलेंसी एंटोनियो गुटेरेस का विशेष तौर पर आभारी हूं कि उन्होंने इस समय की मांग को समझा है। उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल के सेकंड कमिटमेंट पीरियड की रेटिफिकेशन प्रक्रिया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अमलीकरण में तेजी लाने के लिए भरसक प्रयास किए हैं और इसलिए ही हम भारत में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं सबका विकास की बात करता हूं तो उसमें प्रकृति भी शामिल है और उसमें सबका साथ यानी 125 करोड़ देशवासियों की सक्रिय भागीदारी का भी आह्वान करता हूं। साथियों, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए गांव और शहर दोनों महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारे यहां रोजगार का एक बड़ा हिस्सा गांव और खेती से जुड़ा है, तो हमारे शहर सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्री के हब है और इसलिए सरकार होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। देश के वर्तमान और भविष्य के लिए सरकार की हर पॉलिसी का आधार हरा भरा और साफ सुथरा पर्यावरण है। साथियों, हमारे गांव हमेशा से ही पर्यावरण के प्रति सचेत रहे हैं, वो प्रकृति से जुड़े रहे हैं। बीते 4 वर्षों में हमारे यहां गांवों ने अपनी इस शाश्वत शक्ति को और अधिक विस्तार किया है।
गांवों में भी वेस्ट टू वेल्थ और वेस्ट टू एनर्जी जैसे इनिशिएटिव से बायो वेस्ट को ऊर्जा में बदलने के प्रयास शुरू हुए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर सॉइल हेल्थ कार्ड और पर ड्रॉप मोर क्रॉप को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे हमारी मिट्टी और जल स्रोतों को जहरीले केमिकल से मुक्ति में मदद मिल रही है और पानी के उचित उपयोग की भावना प्रबल हुई है। जहां हम इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो हमारा मोटो है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमारा मोटो रहा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। साथियों, आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे तेज गति से शहरीकरण हो रहा है। ऐसे में अपने शहरी जीवन को स्मार्ट और सस्टेनेबल बनाने पर भी हम बल दे रहे हैं। आज देश भर में जो भी नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और वो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लक्ष्य के साथ बनाए जा रहे हैं। आज भारत में 100 स्मार्ट सिटी का काम तेज गति से चल रहा है। सीवर से लेकर सर्विलांस तक स्मार्ट व्यवस्थाएं तैयार की जा रही हैं। स्थानीय लोगों के सुझावों के आधार पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी इस व्यवस्था का आधार है। देश के नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे को इको फ्रेंडली बनाया जा रहा है। उनके साथ साथ ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। नए हाईवेज के साथ साथ विकसित हो रही अन्य सुविधाओं की सारी ऊर्जा जरूरतें सोलार पावर से पूरा करने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। मेट्रो जैसे सिटी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को भी सोलार एनर्जी से जोड़ा जा रहा है। वहीं रेलवे की फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को हम तेजी से कम कर रहे हैं। साथियों, आज भारत में घरों से लेकर के गलियों तक, दफ्तरों से लेकर के सड़कों तक, पोर्ट से लेकर और एयरपोर्ट तक वाटर और एनर्जी कंजर्वेशन की मुहिम तेज गति से चल रही है। एलईडी बल्ब से लेकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग तक हर स्तर पर टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, घर के किचन से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक को क्लीन फ्यूल बेस्ड बनाने की तरफ हम तेजी से काम कर रहे हैं। बीते 4 वर्षों में 10 करोड़ से अधिक घरों को एलपीजी से जोड़ा गया है, जिसमें से 5.5 करोड़ से अधिक तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से दिए गए मुफ्त गैस कनेक्शन है। घरों के साथ साथ मोबिलिटी को भी धुआं मुक्त करने का अभियान चल रहा है। एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए एनसीएपी यानी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है। वाहनों के लिए एमिशन स्टैंडर्ड तय करने की बात आई तो हमने BS4 से सीधे BS6 मानक को लागू करने का फैसला किया है। साथियों, आज जब भारत का फोकस ईज ऑफ लिविंग पर है, सबको घर, सबको बिजली, सबको भोजन, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, ये हमारे महत्वपूर्ण पहलू है और तभी पर्यावरण को लेकर हमारी प्रतिबद्धता में बढ़ोतरी हुई है, हमने कमी नहीं आने दी। हमारा प्रयास है कि अगले 2 वर्षों में एमिशन इंटेंसिटी वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 20 to 25% कम हो।
हमारी कोशिश इसे साल 2030 तक 30 to 35% तक कम करने की है। इन सारे प्रयासों के बीच अगर सबसे बड़ी सफलता हमें मिली है तो वो है लोगों के बिहेवियर, लोगों के थॉट प्रोसेस में बदलाव। पर्यावरण के प्रति लगाव हमारी आस्था के साथ साथ अब आचरण में भी और मजबूत हो रहा है। इसी वजह से भारत आज ये संकल्प ले सका है कि वो खुद को 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करके रहेगा। और मुझे विश्वास है कि महात्मा गांधी के विराट व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए नया भारत अपने इन संकल्पों को पूरा करेगा और विश्व के लिए एक मॉडल बनकर के उभरेगा। भारत के प्रयासों को सम्मान देने के लिए मैं फिर एक बार संयुक्त राष्ट्र का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। आप सब समय निकाल करके इस महत्वपूर्ण अवसर में शरीक हुए। व्यक्तिगत रूप से ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जिन संकल्पों को लेकर के हम चले हैं उसको पूरा करने में हम कोई कमी न छोड़े। और आपने आकर के हमारा हौसला बुलंद किया है। मैं इसलिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। प्रकृति के प्रति है वह हम सबको हमेशा प्रोत्साहित करती रहेगी, हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मे आई रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज टू काइंडली स्टेप फॉरवर्ड फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ। The highest environmental award of the United Nations, the Champions of the Earth Award, conferred upon the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. A moment of great pride for all Indians, a moment to be savoured, a moment to be photographed and remembered for all times to come. India has taken several radical steps when it comes towards a responsibility towards the environment, one of which, of course, is what the Honorable Prime Minister was talking about, ensuring that India becomes single-use plastic-free by the year 2022. The Prime Minister dedicated this award to the Indian value system. And indeed, in our value, there has always been respect for the environment. In our value system, our trees, the environment, the earth are treated like gods. So those were the live visuals from New Delhi, where Prime Minister Narendra Modi was bestowed with the United Nations' highest environmental honour, Champions of the Earth Award, at a special ceremony. United Nations Secretary General Antonio Guterres presented him with the award. And Prime Minister Modi said in his address that climate and calamity are directly linked to culture. And until the issues of climate become embedded in our culture, it will be difficult to save ourselves from natural calamities. He further said that the issue of climate change cannot be tackled without ensuring climate justice. He said that India will fulfill all its environment pledges and will become the model for the rest of the world. And that's all in this special broadcast. Thanks for watching.